Okay, so today's topic is about DCCP. So the DCCP is full form ready for data. Right first. Data, datagram C for you know very well conjunction means what, right? We have studied in our previous slides या video conjunction किसी conjunction controlling का काम कौन conjunction means what then also मतलब जो traffic किस वजह से हमने ICMP पैकेट्स में देखा था राइट ICMP में conjunction control होने की वजह से कैसे वो प्रोटोकॉल डिस्कार्ड किया जाता था राइट so this is a conjunction so this is what DCPP that is datagram conjunction control प्रोटोकॉल सो ये क्या करता है ये डीसीसीपी प्रोटोकॉल इट्स कंट्रोल द कंजंक्शन देन आल्सो फिर भी सुन लीजिए कंजंक्शन दैट्स नथिंग बट द ट्रैफिक जो ट्रैफिक आता है उसको कंट्रोल करने का ट्रैफिक मींस मैसेज पे मैसेज आना दैट इज आल्सो वी कैन से ट्रैफिक राइट अगर एक सेंडर टू रिसीवर उस पे लाइन बाय लाइन मोर मैसेज आया दैट इज द ट्रैफिक सो बिकॉज ऑफ ट्रैफिक प्रॉपर मैसेज सेंड नहीं हो सकता राइट ट्रैफिक जब तक clear नहीं होता that is conjunction so DCCP here datagram conjunction control protocol datagram is basic transfer unit associated with a packet switch network okay it is a basic transfer unit right so here datagram conjunction control protocol working group is maintaining okay working group is maintaining the data conjunction protocol DCCP is a general purpose DCCP purpose protocol. Okay. So I said that about DCCP, it is a general purpose protocol. Here what happened? This here that provides function, which provides function like let's see 1 minute functions such as establishment. Okay, 1 minute. Okay, establishment. Then okay, and function. Okay, so here DCCP is a general purpose protocol that provides functions such as establishment and maintenance and conjunction control of that पैकेट फ्लो मतलब उसको कैसे मेंटेन करना है उस फ्लो को कंजंक्शन कैसे कंट्रोल करना और कैसे एस्टेब्लिश करना दिस ऑल द वर्क done by the DCPP which is the general purpose protocol okay so DCPP is a character to work in some areas it's work in some areas okay works let's see the works okay the first one is what the first area focus on maintenance issue is focus on wait 1 minute is focus on maintenance okay focus on maintenance issue that is you can say that what type of issue like bug fixes okay okay so first area is what is maintenance the issue like bug fixes to the current DCPP okay the second then the second one is दिस इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू मतलब क्या इश्यूज हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने का वर्क भी डीसीपी का है इट इंक्लूड्स यू कैन से इट इंक्लूड्स
Okay, the second area is that this includes identify of issue, bug fixes, and progress of the specification. So it's help to progress specification, and it's include the identify the bug fixes, and it maintain the first area is what is maintain the what is maintain is work to maintain bug fixes. Okay, so this is the area which will help in DCPP. Then third area, it will support the adoption and use of DCPP by upper layer application with DCPP, as well as supporting documents. Support documents, okay, that enhance the support the document that enhance the DCPP. Okay, so deployment and management. So here in fourth area, identify and developer module. Here the fourth area is identifies and develop modules and develop the modules. Develops the module. Okay, so here what happened, we can say that, let me, okay, here the four areas are there. Okay, so this four area, maintenance, then maintenance issues. This is the first area which work in DCPP. Then it includes identify of issue, bug fixes, support the docs, and enhance DCPP. It identify the developer modules. Here what happened, identify and develop the module extension to the DCPP specification that increase the usefulness of DCPP. The goal of this four work area, yeah, we say that these four areas works, yeah, this works. The goal of this works, this four work, is to make DCPP attractive. So इसके through हमें DCPP को attractive बनाने के लिए we are using this work, yeah, we are these works are take place, yeah, taking the participate in DCPP. Okay, means how to maintain the bugs, इश्यूज, मतलब हाँ, जो भी इश्यूज उसको कैसे मेंटेन करना है. देन हाउ टू आइडेंटिफाई द इश्यूज. अगर मेंटेन करना है तो वी हाउ टू आइडेंटिफाई द व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट कंजेशंस आर ऑकर, एंड हाउ टू कंट्रोल दिस. देन we have to support document, enhance the DSP. If we support the document, then we can enhance the DCPP, right? And it's fourth one is the help to identify the identifies and develop modules. Means it's used to identify and develop modules. This is the four. With the help of these four works, this we can make the attractive. Okay, so the work will provide refine aims to the extreme conjunction control scheme. But then currently provided by DCPP, and must also include, for example, mobility support for DCPP. Okay, this work includes the provision of new conjunction control profile. So this is the short intro of DCPP which we have seen now. If in exam maybe they can ask that explain the DCPP functions, yeah, work. So you have to just show, yeah, you have to just maintain, you have to just say this all. Okay, so after this, okay, we will move on next point, that is 1 minute. Okay, our next point is let me take the first PPT of this point. Okay, TLS and DTLS. Okay, so today's okay, so on it. Okay, so TLS and DTLS, this is our next point. Okay, so TLS, transport layer security. Okay, encrypt the communication between web application and server. So TLS's work is nothing but is a transport layer security which encrypt the communication between web application and server. देखिए मैंने अपना सिस्टम ओपन किया,
वेब ब्राउजर पर कोई पर गई, कुछ सर्च किया। सपोज मुझे शॉपिंग करना है तो मैंने ब्राउजर पर शॉपिंग आइटम सर्च की। तो जब सर्वर पर सॉरी सम ओके 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 लेट्स ओके सो कहाँ थे हम? ट्रांसपोर्ट लेयर टीएलएस में, राइट? सो मैंने क्या कहा? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर। ओके, देखिए मैंने अपना सिस्टम ओपन किया। ओके, वेब ब्राउजर पर गई, कुछ सर्च किया। सपोज मुझे शॉपिंग करना है तो मैंने ब्राउजर पर शॉपिंग आइटम सर्च की। तो जब सर्वर पर कोई चीज सर्चिंग के लिए जाएंगी तो एक कम्युनिकेशन बनेगा, किसके एंड किसके बीच में? एक मेरे और एक वेब एप्लीकेशन के बीच में। जब जो ब्राउजर पर यूज कर रही हूँ, और मतलब एक मेरे बीच में और एक जो ब्राउजर पे यूज कर रही हूँ, ओके। और दूसरा कम्युनिकेशन जो होगा वो वेब ब्राउजर जब सर्वर पर सर्च होगा, जो भी मैं सर्वर पर सर्च करूंगी, ओके, उसके बीच में। जब वेब एप्लीकेशन सर्वर पर जाके कुछ सर्च करती हूँ, तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक डेटा शेयर होता है। वो डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। किस तरीके से? अगर हम लोग किसी साइट पर जाकर ट्रांजेक्शन करते हैं, ओके, तो उसी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को हाइड करना या इनक्रिप्ट रखना, ताकि अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए। इसी को हम लोग टीएलएस बोलते हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर टीएलएस, अगर हम सबसे पहले ये जान ले कि इसकी जरूरत क्यों होती है, तो आपको ये टीएलएस बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। आई वांट टू सर्च समथिंग टू बाय बाय। तो सपोज मुझे कोई चीज खरीदना है, मैं कोई चीज खरीदना चाहती हूँ, ओके। उसके लिए सपोज किसी वेबसाइट पर गई, सपोज वेबसाइट का नाम XYZ। मैं एक्स वाई जेड पर जाके सर्च किया कि मुझे कुछ गुड्स लेने हैं। मुझे मान लीजिए एक सोफा लेना है। तो मैं सोफा लेने गई। मैंने पसंद किया, फैमिली मेंबर्स को दिखाया, पूछा, ओके, पसंद किया, देन मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने पेमेंट खुद मतलब ऑनलाइन थ्रू मैंने पेमेंट किया, ओके। मैं अब वेट कर रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा। अगर लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है? सपोज मैंने कोई शॉपिंग किया, मैंने उसको पे किया बाय माय कार्ड, एंड सपोज इन दिस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी नहीं है, ओके, सपोज। तो कौन से प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, एंड सो क्यों हमें टीएलएस की नीड होती है, ओके। सो अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं विदाउट टीएलएस। सबसे पहले प्रॉब्लम हो सकती है अगर ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंशियल नहीं हुआ, राइट? टीएलएस सिक्योरिटी नहीं थी, ट्रांसलेशन इनक्रिप्ट नहीं था, तो मेरी कार्ड डिटेल सारी एक अटैकर्स के पास पहुंच जाएंगी, राइट? अगर उसको वो ट्रू मतलब ट्रेस कर लेता है, ओके, दूसरा डेटा इंटीग्रिटी के बिना, मतलब कि मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको वो जान जाएगा, और मैंने जो ऑर्डर किया है उसको अटैकर चेंज भी कर सकता है, राइट, और रिप्लेस भी कर सकता है। थर्ड, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, ओके, तो वो एक ऐसी फिशिंग साइट पर लेके जा सकता है मुझे, और मैं वहां पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दूंगी, और उस डिटेल्स को वो रैंडम कुछ भी एक्शन ले सकता है रैंडमली। तो टीएलएस नहीं होने से ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है, जैसे कि अटैक, अगर टीएलएस नहीं है, इंक्रिप्शन नहीं हुआ, इंटीग्रिटी नहीं हुआ, जैसे कि ये देखिए अभी हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे। दिस थ्री, if they are not there, then attackers can easily hack our important data, our card information, our information, then it can change the place which we have। मतलब मैंने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करना चाहती हूँ उसको वो ही कैन रिप्लेस, ही शी व्हाटएवर, राइट? सो अटैकर्स ये सब कर सकता है विदाउट, इफ वी डोंट हैव टीएलएस, राइट? इफ वी डोंट हैव द सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ओके। तो कुछ भी एक्शन ले सकता है रैंडमली।
तो टीएलएस नहीं होने से ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें टीएलएस की नीड होती है। इसके जो 3 कंपोनेंट्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। और जो टीएलएस है, ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी है, ये प्रपोज की गई थी IETF इट प्रपोज। ओके। सो हियर IETF इट्स नथिंग बट इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। टीएलएस का पहला वर्जन आया था 1989 में। ओके। अगर एग्जाम में पूछ सकता है द फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, सो इफ यू सो आपका ऑप्शन होगा 1989, 2018 या वट एवर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पहला वर्जन 1989 में आया। अगर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आए आपको इस बार, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रही है एमसीक्यू, तो ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो कौन सा ईयर में कौन सा प्रोटोकॉल आया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो टीएलएस ये पहला वर्जन था 1989 में। एंड इसके जो रिसेंट वर्जन है, मतलब अभी इसके बाद 1.3 एक रिसेंट वर्जन है जो कि 2018 में आया था। ये बहुत ज्यादा अडोप्टेड प्रोटोकॉल है और इंटरनेट पर ये डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी देने की के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले सिक्योर सॉकेट लेयर था, राइट। एसएसएल, यू हैव स्टडी एसएसएल इन योर प्रीवियस एरिया, राइट। एसएसएल आपको पता है ये भी एक प्रोटोकॉल है। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको ओवरकम करने के लिए टीएलएस को बनाया गया। तो अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। यहाँ पे हम एक मेरा एप्लीकेशन क्लाइंट्स एंड यूजर या बोल सकते हो, देन दिस सर्वर प्रॉक्सी एंड वेब सर्वर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा वेब सर्वर है, हमारा एप्लीकेशन क्लाइंट या एंड यूजर है जो कि चीजों को यूज करने के लिए आया। बीच में मिल रही है एक ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी प्रॉक्सी, राइट। ओके। ये जो सिक्योरिटी है यही बचा रही है हमारे डाटा को एप्लीकेशन यूजर से, वेब ब्राउजर के जाते समय अटैकर से। अगर कोई अटैकर अटैक करने आएगा तो वो उसको तोड़ना नहीं पाएगा, उसको तोड़ना आसान नहीं है। तब तक हो सकता है कि हमारा ट्रांजेक्शन वो कंप्लीट हो चुका हो। तो इससे मतलब इससे में ये हेल्प करती है कि एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते, राइट। अब कैसे ये हेल्प होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट होता है इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन जो होता है वो डेटा को बचाता है, हमारा डेटा को एनकोड कर देता है अदर लैंग्वेज में, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी या कोई अटैकर्स हमारे डेटा को स्टील ना कर सके, चुरा ना सके, स्टोलन ना कर पाए। ओके। सो इंक्रिप्शन इसमें इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन है इंटीग्रिटी ये ऑप्शंस होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कंपोनेंट्स वी कैन सेफली सिक्योरली कैन सेंड इजीली आवर इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर सर्वर। ओके। तो दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ये क्लेम करता है कि जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, मान लीजिए एक सेंडर एक रिसीवर, सेंडर ने रिसीवर को भेजा डेटा, तो इन दोनों के बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्लेम करता है कि ये दोनों सही पर्सन है या नहीं जिनके पास डेटा जाना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी हो तो वो डेटा नहीं सेंड कर पाता, राइट, बिकॉज आइडेंटिफाई कर लेता है कि तो ये ऑथेंटिकेशन भी टीएलएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर थर्ड पार्टी कांट मीन्स व्हाट, 2 पर्सन्स वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर। सपोज अगर उन दोनों को जानेगा, आप कोई वेबसाइट में विजिट करते हो या किसी भी फर्स्ट आपको यूजर एंड पासवर्ड आता है, अगर इफ आप उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, देन ओनली यू कैन एंटर योर पासवर्ड यूजर नेम। अनदर वन कांट, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं होगा। अगर उसने ट्रेस किया अटैकर्स ने, देन ओके, बट विदाउट नोइंग पासवर्ड एंड आईडी, हाउ शी कैन एंटर, राइट। सो ये ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे वर्क है। तो ये ऑथेंटिकेशन टीएलएस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो तीसरा मेन होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वेरीफाई करता है जब हमारा डेटा जा रहा था
तो कहीं बीच में किसी ने चुराया तो नहीं, या किसी ने चुराने की कोशिश तो नहीं करी, या किसी ने हमारा डेटा एक्सचेंज तो नहीं किया गया। ये सारा देखने का काम कौन करता है? इंटीग्रिटी। तो इंक्रिप्शन ये एनकोड डिकोड करने का काम करता है, कोडिंग फॉर्म में, मतलब लैंग्वेज चेंज कर लेता है, किसी भी फॉर्म में डालता है वो, राइट। एंड ऑथेंटिकेशन यू नो वेरी वेल, हमने बहुत से लेक्चर्स में या चैप्टर्स में ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, इंटीग्रिटी की स्टडी किया है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, देन आल्सो आई हैव एक्सप्लेन। सो जो ये टीएलएस का ये जो डायग्राम है, यहाँ पे वेब यूजर, सॉरी एंड यूजर, एप्लीकेशन क्लाइंट, बोल जो भी बोलना चाहते हो आप, और वेब सर्वर, इन दोनों के बीच में जब ये कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ पे ये जो टीएलएस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी प्रॉक्सी है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट हमारा डेटा सिक्योरली सेंड और रिसीव कर पाती है। सो ये हमने टीएलएस देखा। नाउ वी विल मूव ऑन टीएलएस। सो you might have know what is socket. Okay, let me read it over. What is socket? It's basically a medium by which we do IPC, that is either process communication. IPC, it is a inter process communication that can happen with two processes in the same computer, or between same computer, or between different process in different computers, same computer and different process. Now that information that get exchanged within two of this process, that is not encrypted, that is clear text, so anybody can see this information. If for example you are giving some credit card information, okay, within the IPC, you know now what is IPC? It is it's nothing but it's inter-process communication. Okay, if for example you are giving some credit card information within the IPC through socket, that can be stolen by hackers. Why? Because we are here not security provided, which is kind of looking that intermediate packets going through a network between two processes. The main thing we need to take care it's the authentication and encryption of that while transforming from one place to another. For that purpose, SSL is used. So SSL is a layer that comes above socket. Okay, SSL is layer that comes above socket. So whatever data we are going to write on the socket, that will travel to the another, and before write into the socket, it need to be encrypt and authenticate using SSL. I hope you got little bit idea about what is SSL. Now enhance in that SSL came TLS. It is a you can say that it's a short as name. You can say it is a higher version of SSL, providing better enhancement on the encryption and authentication algorithm, right? So there are basically two variants of SSL. You can say one is TLS and another is DTLS. What is TLS? TLS is nothing but protection over TCP, and DTLS is nothing but protection over UDP. Now, why you need both them? Why can't we have one? So initially TLS was invented, or you can say TLS was TLS come into the world, and TLS, that security protocol, does not have to take care of a lot of things that TCP protocol was already providing. 1 minute. Okay. So what I said here. Okay. So TLS, that security protocol, does not. Okay. Does not what TLS and security protocol does not have to take care of lot of things that TCP protocol was already providing. For example, reliability. When I say reliability, that is in the term of acknowledgement, which disappears self take care of. Second is fragmentation, and also it take care of TLS has just responsibility to for the security part of the TCP data. It does not have to take care of anything else, right?
In UDP, reliability is a concern because there is a no acknowledgement in UDP protocol. Is no reliability, there is a no reordering, there is a no accent for packet loss. So these things are something mandatory it needs to. Okay, so you know very well TCP and UDP, and I already explained UDP is what type connection-less protocol and TCP is connection-oriented. So UDP doesn't care about packets or it doesn't give the guarantee or packet is lost, then I can recover it. Like you know very well about TCP and details. So just know you have to understand TLS is nothing but its protection over TCP and GTLS is nothing but its protection over UDP. Okay. So be take care of by the details protocol, at least at the time of handshake or establishing the secure channel between two parts. So I hope you understand. TLS and DTLS both go hand in hand. Both has almost similar functionality. DTLS full form I already explained datagram transfer layer what security. So there are only few principal difference DTLS you can say over TLS. When we implement DTLS over the UDP, we need to take care of creation, addition, things. So in DTLS, all things packet loss, reordering, and layer message fragmentation. Those things should be take care during the handshake phase. Because handshake take care of establishing the secure channel at that point of time, at least everything has to go and hand in hand and it can not go out of order. So how does DTLS take care of packet loss? DTLS take care packet loss by introducing timer. So after creation time or expiring details, it is the 1 second during handshake. So if one packet loss at the means how it's the handshake say yeah, loss at another and remote and then it is going to retransferring अगर कोई packet loss होता है वो retransfer फिर से करता है okay that packet again after the timer has expired. That is one feature additional. The second feature is reordering. If the packet have reached the other party out of order, then the packet is going to buffer it unless the intent packet has achieved. How it is going to find out which packet is needed to receive. Next, that is by introducing a new fields in ordering of the TLS. That is called epoch and sequence number, which is not there in TLS. Now we will go to the third point in the message size. Now, if the message size is bigger than the MTU size, for example, like 3000 bytes of data that needs to transmit from source to destination, but MTU 1500, how do you send the data? The destination in case handshake that can happen. So with the help of handshake, this can happen. There are two kinds of packet in handshake, which basically can be very large size packet. What are those two? One is key exchange. The key can be large size key, and another one is certificate that they get exchange that is ideally, and ideally MTU on network is less than equal to 1500 bytes, but this packet can go beyond that, so fragmentation needs to be happen, okay, with the help of this proxy during handshake, and that is also take care of DTLS. So here MTU is maximum, it means a maximum transmission unit is largest packet size, okay. So हमने ये देखा कि TLS it's overcome is nothing but is what you can say handled by TCP, and DTLS is nothing but is overcome is handled by what UDP. So you know very well जैसे कि UDP में प्रॉब्लम्स होती थी वो मतलब अगर इफ पैकेट लॉस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूडीपी डजंट केयर. सो विद द हेल्प ऑफ सो उसी चीज को कम करने के लिए DTLS is support in UDP. So now just to summarize again, three principle different between DTLS, timer and message loss. You know, recover. Okay. Second on is reordering message on the remote end.
Third one is higher message size that you should fragment, right? अगर हायर साइज हो तो उसको आपको फ्रैगमेंट करना होगा, राइट? द अनदर थिंग इज रिप्ले डिटेक्शन. Replay detection means if there is a duplication of packet that reach on device which has DTLS channel established, or it is in the process of establishing. If duplicate packets arrive, then using the sequence number, it can identify that it is a duplicate packet, and it can drop it, and it can provide you message that we receive duplicate packet. So we have studied about this the TLS, okay. TLS transfer less security and DTLS is datagram transfer less security. So yeah, इससे पहले वर्जन था SSL, उससे पहले सॉकेट था. सॉकेट की वजह से मीन्स आपको मैंने जैसे एग्जांपल दिया था ऑनलाइन शॉपिंग में SSL विद द हेल्प ऑफ SSL कैसे ओवरकम किया गया, राइट? देन TLS होने की वजह से कैसे वी कैन सिक्योरली सेंड आवर डेटा, ओके. देन DTLS के हमने उसके कुछ पैकेट्स के हैशटैगिंग के रूल्स रिस्पांसिबिलिटी वी हैव study. Okay, so today's lectures over here. Thank you.